ओके सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोग का मेरे यूट्यूब चैनल रोहित हेयर कट ट्यूटोरियल में। तो दोस्तों आज मैं आप लोग के लिए लाया हूँ फेदर विथ लेयर हेयर कट, वो भी लॉन्ग हेयर पर। तो चलिए पूरा डिटेल में देखते हैं कि अगर आपको फेदर विथ लेयर हेयर कट करना हो तो किस तरह से आप करोगे। तो सबसे पहले आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पर लेंथ कितना ज़्यादा लॉन्ग है और यहाँ पर हमने शैम्पू और कंडीशनिंग किया है जो कि प्रॉपर तरीके से हमें ग्रिपिंग दे पाएगा वॉश की वजह से और एक नीट एंड क्लीन लुक मिल पाएगा। तो यहाँ पर हम सबसे पहले गाइडलाइन क्रिएट करेंगे। गाइडलाइन क्रिएट करने के लिए हमने लिया है ट्रायंगल सेक्शन। दोस्तों ट्रायंगल सेक्शन हमने इसलिए लिया है ताकि हमें हमारे क्लाइंट को कितना फेदर कहाँ से स्टार्ट करना ये सारी चीज़ें हम लोग कवर कर पाएँ। तो दोस्तों यहाँ पर देखोगे ट्रायंगल सेक्शन हमने लिया। ट्रायंगल सेक्शन को हम लोग क्लिपिंग कर रहे हैं और यहाँ पर हम हमारे स्टूडेंट लोग को भी ट्रेन कर रहे हैं। दोस्तों हमारी एकेडमी में ये हेयर कट हो रहा है जहाँ पर आप लोग भी सीख सकते हो आकर हेयर कट, हेयर कलर, हेयर ट्रीटमेंट, जो भी केमिकल वर्क, जो भी आपको सीखना चाहे हेयर से रिलेटेड सारी चीज़ें हमारे एकेडमी में आकर सीख सकते हो। सितंबर से हमारी बैच यानी कि 4th बैच स्टार्ट हो रही है और उसकी एडमिशन स्टार्ट हो चुकी है। तो जो स्क्रीन पे नंबर दिख रहा है उस नंबर पे आप कॉल या व्हाट्सअप करके पूरा डिटेल लीजिए और अपनी सीट बुक करिए, क्योंकि ये सीट बहुत ही लिमिटेड होती है। और अगर कहीं आप दूर से हो तो पीजी की भी फैसिलिटी है, आप यहाँ पर रह के सारा कोर्स अपना 2 मंथ्स का कंप्लीट कर सकते हो। फिलहाल यहाँ पर देखिए कि हमने गाइडलाइन क्रिएट किया है और गाइडलाइन क्रिएट करने के लिए हमने कट किया है चीन लेवल से थोड़ा नीचे, यानी कि हमारे क्लाइंट से हमने कंसल्ट किया कि उन्हें कितना लेंथ चाहिए फ्लिक्स का और उसी के अकॉर्डिंग आप इसे करोगे कट। दोस्तों कटिंग आप लोग का बहुत ही प्रॉपर तभी होगा जब आपकी ग्रिपिंग परफेक्ट होगी, जब आपका हेयर नीट एंड क्लीन होगा और जब आपको आपकी डिग्रीज पता है कि आप कितने परफेक्ट तरीके से आपने डिग्री आपकी ली है, देन आप उसी हिसाब से सारा हेयर कट कंप्लीट कर पाओगे। अब यहाँ पर हम लोग कर रहे हैं फेदर हेयर कट, जिसे बहुत लोग फॉरवर्ड ग्रेजुएशन भी बोलते हैं। फॉरवर्ड ग्रेजुएशन हेयर कट जो कि आपको पता है कि हम यहाँ पर 45 डिग्री में कट करते हैं, लेकिन 45 डिग्री में कट करना है तो सबको पता है, लेकिन किस तरह से कट करना है, कितना कट करना है, लेंथ कितना शॉर्ट करना है, गाइडलाइन कहाँ है, सारी चीज़ें दोस्तों आप जब देखोगे तभी प्रॉपर तरीके से सीख पाओगे। तो यहाँ पर देखिए हमने हमारी गाइडलाइन जो कि फ्लिक्स हमने कट किया था वही हमारी गाइडलाइन है और उसी गाइडलाइन को फॉलो करते हुए हम कट करते जा रहे हैं। दोस्तों यहाँ पर हमारा जो सेक्शन होगा वो डायगोनल सेक्शन होगा। अब जैसे कि आप लोगों को पता है कि डायगोनल में 2 टाइप्स के सेक्शंस होते हैं, एक होता है डायगोनल फॉरवर्ड सेक्शन और एक होता है डायगोनल बैकवर्ड सेक्शन। तो यहाँ पर फॉरवर्ड ग्रेजुएशन हेयर कट चल रहा है तो यहाँ पर हम लोग डायगोनल फॉरवर्ड सेक्शन लेंगे और इस सेक्शंस को लेते हुए हम सारा हेयर कट नोज़ लेवल पर लाकर 45 डिग्री में कट करेंगे। दोस्तों पूरा एंगल किस तरह से कट होगा, बैक साइड का कैसे होगा और हमारा लेफ़्ट साइड का, राइट साइड का सेक्शनिंग कैसे कट होगा, सारी चीज़ें दोस्तों आप लोग लास्ट तक वीडियो पर बने रहो ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आए कि फेदर विथ लेयर हेयर कट को आपको जब करना हो तो किस तरह से आप ईजी तरीके से कर पाओगे। Inside the book that I wrote are all the words that we spoke, yet only with our eyes. Now is the time to choose. Somebody wins and some lose. I can see through your disguise. Lay it down, hope for something better. Looking at the clouds, the sliver in the weather. You can't keep this up. The lies are just too much. Kick back, start another fire. Looking at the clouds, making shapes that you admire. And you can't stop it now, 'cause you don't know how.
book that I wrote, or all the words that we spoke, yet only with our eyes. Now is the time to choose. Somebody wins and some lose. I can see through your disguise. Lay down, hope for something better. Looking at the clouds, the sliver in the weather. You can't keep this up. The lies are just too much. Kick back, start another fire. Looking at the clouds, making shapes that you admire. And you can't stop it now, 'cause you don't know how. You can't stop it now. Inside the book that I wrote are all the words that we spoke, yet only with our eyes. Now is the time to choose somebody. ओके सो दोस्तों फाइनली यहाँ पर हमारा हेयर कट कंप्लीट हो चुका है। अब मैं आप लोग को दिखा पा रहा हूँ कि हमारा ब्लो ड्राई के बाद किस तरह का लुक आया है। आप लोग भी कमेंट्स करके बताइए कि कैसा लुक आया है।
और अगर आपको भी ज्वाइन करना हो तो ज़रूर दोस्तों स्क्रीन पे दिए नंबर पर कांटेक्ट करना और सारी चीज़ें आप लोग डिटेल्स लीजिए और सितंबर की बैच में आप लोग अपना नाम रजिस्टर कराइए। तो चलिए इसी तरह नए नए वीडियोज़ आते रहेंगे, आप लोग भी अपना प्यार बनाए रखिए और इसी तरह हम आपके वीडियो लाते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय।